पोजीशन क्या है, व्हाट इज परमिशन, व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज पीपल डेवलपमेंट, और फिर पिनेकल क्या है। सो पोजीशन पे आकर आप देखते हैं कि इट्स अबाउट द राइट्स। पोजीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सिचुएशन में एक शख्स को मिलती है और ऑफ कोर्स उसको किसी वजह से उस पोजीशन पे लिया गया है। अब जब लिया गया है तो समहाउ उसकी लीडिंग एबिलिटीज देखते हुए कि ये कुछ कर पाएगा, उसके स्किल्स, सो वो पोजीशन पे आ गया है और अब लोग उसको इसलिए फॉलो करेंगे क्योंकि उसकी पोजीशन की रिक्वायरमेंट है। लोग अभी उसको जानते नहीं है, लोग अभी उसको जान पाए नहीं है, लेकिन वो उस पोजीशन पे है, इस वजह से लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे। इफ यू थिंक you are a leader because of the position, so please know that it's just the beginning to get to know, and also just a beginning to show if you are a leader. So position एक शख्स के बारे में ये नहीं बताती कि वो लीडर है। पोजीशन वो अपॉर्चुनिटी है जिस पे वो दिखा सके कि वो लीडर है। अब इसी पोजीशन पर रहते हुए वो अपनी लीडरशिप एबिलिटीज जब दिखाना शुरू करे, अपने लीडरशिप ट्रेट्स जाहिर करना शुरू करे, और उसमें नंबर 2 इसी लेवल पर रहते हुए जो नेक्स्ट लेवल है परमिशन, और आप देख सकते हैं कि परमिशन इसके साथ लिखा हुआ है रिलेशनशिप्स। सो जब वो परमिशन लेवल पे आए यानी लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू करे, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट शोज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप इन हिम। इसमें आकर ये बात आती है दैट यू अलाउ पीपल टू कम टू यू एंड यू एक्चुअली एक्सटेंड योर हैंड टुवर्ड्स पीपल टू गेट टू नो देम। अगर आप लोगों को जाने नहीं है, अगर आप लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, तो लोग आपको आपकी पोजीशन की वजह से फॉलो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। ऐसे में यू एक्चुअली आर नॉट अ गुड लीडर बट यू आर जस्ट अ लीडर। सो वो एक पोजिशनल लीडर वाली जगह पर आप हैं, तो लोग पोजीशन की वजह से मजबूरन आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप एक्चुअल लीडर या ट्रू लीडर अगर हैं, तो देन यू गो टू दिस नेक्स्ट लेवल एंड यू एक्सटेंड योर हैंड by asking them how they are, by going out of the box, track को थोड़ा extend करते हुए, and you start asking them वो कैसे हैं, you start knowing them, like if you are a manager, if you are a team leader, you get to know that who works on what pace, उसके personality type क्या है, you get to know maybe someone has some issue, some problem at home। तो इस वजह से यू ग्रेजुअली इंटरैक्ट विद पीपल, यू गेट टू नो, और अब यहाँ पर परमिशन है कि लोग भी आपके बारे में थोड़ा जान पाए और बिल्कुल एक जो फॉर्मल सेटअप है उससे थोड़ा आप निकल पाए, और फिर उसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्डिंग में आ जाते हैं। और ये है वो लेवल ऑफ लीडरशिप जिसमें आपकी इंटरैक्शन बढ़ती है, पीपल गेट टू नो यू मोर, और उसी में आकर फिर हम थर्ड लेवल की बात करते हैं जहां पर प्रोडक्शन की बात आती है। अब बेशक आप लोगों के साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं, you are on good terms with them, but never forget that you are part of an organization and organization requires a result from you. Organization को result चाहिए है, so result production है, that is the third level. So if you are a good leader, you are also a productive leader. So a good leader produces, a good leader is result oriented, और अब लोग उसको इसलिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इसलिए लीडर जान रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी अच्छे हैं और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, आप ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को आपके होने की वजह से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिस वजह से आप ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, ऑर्गेनाइजेशन को वो चीज मिल रही है। देन यू आर नोन
as a productive leader as well. और इसी पे आकर अब आप तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन यू स्टार्ट वर्किंग विद पीपल और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड यू स्टार्ट सॉर्टिंग आउट कि आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे लोग हैं who got skills and talents जिनको आप तैयार कर सकें, जिनमें आप अपने स्किल्स इम्पार्ट कर सकें और वो रिप्रोड्यूस करें. So it's not only a sole production thing. एक शख्स ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एक शख्स से ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी, बट द टीम दैट यू हैव विद यू, अब आप उनको डेवलप करने में काम करते हैं. और जब आप उनको डेवलप कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई. सो यू आर नॉट ओनली providing the organization with the required results, but also with the people जो प्रोडक्शन के अंदर और ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहे हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और देन कम्स इसके बाद एक और लेवल, एंड दिस इज नोन एज द पिनिकल लेवल, जहाँ पर आकर अब लोग आपको इसलिए फॉलो करते हैं कि आप ऑलरेडी एक आइकॉन बन चुके हैं, आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं, आप प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों के साथ, like you are people oriented person, you know how to use your position, and then you know how to produce for the organization, then you develop other people with you, and you have gained a level where people respect you because of who you are. आगे जाके देखेंगे not many people reach this point, और examples भी मैं चाहूंगी आपसे, कोई नाम आपको याद आए so हम उसके बारे में देखेंगे, but let's dig more into this. So quickly saying position, it's about rights. इस level के leaders हैं, they talk about, you know, what my right is, मेरा right क्या है, or you know, they think कि इस वक्त में because of my position everyone should follow me. So many times they don't work deeper into this, और वो इसके लिए ज़्यादा काम नहीं करते हैं, they don't interact with people. But a good leader, a true leader, he moves on and he gives permission, which means allowing people to interact with them, and now people follow you by knowing you as a person, and they want to follow you because they have known who you are. And also then production, people follow you because of what you have done for the organization. And then people development is the next year on this. People follow you because of what you have done for them. And the pinnacle level is people follow you because of who you are and what you represent. हम यहाँ पर आकर एक ग्राफ देखते हैं that in 5 levels of leadership, the more the length of time passes, the degree of influence increases, right? It's not a matter of, night, and it's not within days you get to become a pinnacle leader. It's not just in few days you get to know everyone and you become productive and you get to achieve this position जहाँ पे everyone is talking about you. It surely takes time. So उसमें with the passage of time, your levels increase, and so does your influence. From the level to the next level, you grow, and as you grow in the levels of leadership, so does your level of influence grow. That is how it is. Now, talking about this thing, if you think position that is the level of leadership where you are growing, where you got an opportunity to show yourself as a leader. And when you go to the next level, third or fourth, you give up on the first level, or the first level has to go away, and now you are at third or fourth level. But actually this does not happen. It happens in a way that you build on the ground of positional level, and you sustain on that level by growing to the level of relationship and permission.
And on that same level of permission, you grow up into the next level of production, then people development, and then pinnacle. आगा दौड़ और पीछा छोड़ नहीं होता है. So it just goes like this, that sometimes you have to use your position, and sometimes you have to use your relationships. Sometimes you are more about the production, and at the same time you are developing other people. So ये सब integrated way में भी चल रहा होता है. Now let's see the 10 insights. और ये 10 insights हैं 5 levels of leadership की. I would like for you कि आप पढ़ते जाएं इनको और आप इनके बारे में बात करें. So these are the 10 insights into the levels of leadership. I would like for you all to read one by one, and if you have anything to elaborate it, you can. Who would like to start? We have people in the class and also online. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम शाइस्ता साहिबा जी, प्लीज. जी, just the first insight, जैसे अभी आपने बात की थी, when you move up a level, you build on the previous level, you don't leave it behind. So you elaborated very well, लेकिन बस I'd like to add कि obviously you cannot say कि हम जो कर लिया या जो हमारा experience है, जो पहला हमारा positional leader का, वो हम छोड़ देंगे. Obviously you are moving with that. उन experiences की base पे ही हम अगला experience build करेंगे अपना. Great, thank you. Yes. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, फराज साहब. जी, सेकंड पॉइंट है लीडरशिप इज डायनामिक. यू कैन वर्क एट अ डिफरेंट लेवल, लीडरशिप लेवल फ्रॉम वन टीम मेंबर टू द नेक्स्ट. आई थिंक इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे मूव करते हैं तो यू शुड बी वर्किंग, जब जब ज़रूरत हो तो आपको दूसरे जो लेवल्स हैं उन पे भी काम करना चाहिए. ये नहीं कि लीडर कहे कि टीम में ये मेरा लेवल नहीं है, मैं इस पर काम नहीं कर सकता. Yes, thank you. Next, please. Number third है the higher you go the easier it becomes to lead. जो मुझे समझ आया इसमें से कि जैसे जैसे हम हायर जाते जाएंगे लेवल पे तो हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा. जैसे आपने कहा कि इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वैसी सी बात हमें इजी हो जाएगा लीड करने में, क्योंकि लोग हमारी बात को वैल्यू करेंगे और वो इन्फ्लुएंस होगा हमारा. थैंक यू. Yeah, yes, thank you. From here. Yeah, we have more people joined online. Yes, Stephen. Yeah, hello. Yeah. Okay, so should I read one? Yes, please. The first Which one. of the number? The first one. Well, let me zoom. I'm using my mobile. Uh-huh. There is no shortcut to get to the next level. Each level requires more time and effort to reach than the previous one. Would you like to elaborate? This is trying to talk about, let me see, 10 insight, okay? That means it's trying to tell us that you cannot use a short route like bypass to get to another level. So for you to get to one level, it has to be what? At one step at a time. It has to be a procedure like 1, 2, 3 to get to where you are. You have to first of all finish with the previous one before moving to the next one. Sounds great. Thank you. Okay. Yeah. Fifth level, please. The fifth insight. Assalamualaikum, ma'am. This is Muhammad Salim. Ji, Mohammed The Salim fifth is, although moving up a level takes a lot of time, moving down one or more levels can happen very quickly. Yeah. ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आपने जैसे पीछे अभी आया है कि जब आपने अपर जाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत होगी, आपको काम करने की ज़रूरत होगी, खुद को एक्सेल करने की ज़रूरत होगी, यानी अपने ऊपर लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत होगी. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसी वजह से आपको नीचे आना पड़ता है
खुदा ना खास्ता मैं वर्ड शायद गलत यूज करने लगा हूँ, क्रेडिबिलिटी के हवाले से, इंटेग्रिटी के हवाले से, तो वो एक सिर्फ एक झटका लगता है, एक सेकंड लगता है आपको वापस डिमोट होने में। True. Yes, that is what happens. So ये insight है 5 levels of leadership की, और उसमें it is telling very clearly it takes you time to build up a building, but to demolish it, it just takes few minutes and seconds. So इसी तरह से एक personality के हवाले से 6th, please, anyone from here in the class on site? Temur? 6th, the higher you go. Sixth. Yeah. Yeah. Definitely अगर हम एक स्टेप को ऊपर जाते हैं, so definitely it take time. जैसे कि आपने बोला कि Rome is not built in a night, right? So एक स्टेप से ऊपर जाने के लिए आप ग्रो कर रहे होते, right? So जितना आप ऊपर जाते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, so definitely आप उसके मुताबिक आपकी लर्निंग ज़्यादा हो रही है, और जिस लेवल पे आप होते हैं तो रिटर्न भी उसके मुताबिक ज़्यादा होता है, बिकॉज़ आपने ज़्यादा कुछ सीखा होता है. Yes. You're not going to skip any step. Yeah. तो हर स्टेप पे आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो सीख रहे हैं. Yeah. So ये नहीं है कि आपको इसका नुकसान है. The more you have learned, the better the benefits you receive. So 7th, Muhammad Ismail Saab, would you like to take part? Okay, maybe you cannot unmute for some reason. Moving to the next level always requires growth. Nobody can say कि हम next level पे बगैर grow किए चले जाएंगे, और इस पे हमने previous session में बहुत अच्छे से बात की थी in the first one. Then 8th is, आप में से कोई भी 8th, 9th and 10th, Mariam Shahid Saiba, she has also joined us. We are discussing the 10 insights of 5 levels of leadership. So 8th, 9th, and 10th insight, if any one of you would like to read and talk about it. Faraz Khan Saab. Which one of the number? 8th, 9th, and 10th. G. Stephen. Not getting to the next level not only limits you, but it also limits each of your team members. Okay, let's take for example like tax. So like if we were giving tax and you and your team member and you're unable to get to the next level, it does not only affect you maybe perhaps as a team leader, but it also limits each of your team member, like you're unable to fulfill something to get to the next level. Ji, Muhammad Salim Saab, please, if you want to add something. When you change position or organization, you rarely stay at the same level. मैम इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है कि जब आप प्रमोट होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज करती हैं, आपका जो होराइजन होता है वो भी इंक्रीज करता है, आपका वे ऑफ थिंकिंग भी इंक्रीज करता है. सेम विद द पोजीशन, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है तो आपका एक्सपीरियंस लोगों से मिलना जो है वो इंक्रीज करता है, उनके एक्सपीरियंसेस से लर्निंग जो है वो इंक्रीज करती है, और आपका अपना जो मोटिवेशन लेवल होता है वो भी इंक्रीज करता है. Agree. Yes. And now we are going to the 9th insight. Thank you for your participation and your input, Muhammad Salim Saab and Steven. Is it 9th or is it 10th now? 9. 9th, then Muhammad Salim 9 just मैंने कर लिया, elaborated. 10th पे है. Acha, when you position, okay. I thought उसी पे बात की थी because he was still on when you turned it on. I'm sorry, I missed. 10th one is you cannot climb the levels alone. So it is very clear that being a leader, you always have some followers or the team. So it's not only you who is growing or moving up the levels, it is actually the whole organization or the followers that you're influencing who will be moving up the ladder. So your growth is influencing them also. Yeah.
So it's not that you climb the levels alone. When you want to go to the next level, it has to be, your addition to others' life, your contribution, so that they can grow as well, and they A do. leader, Then, actually, I'd like to add something. The basic please. difference that we have always studied is that the difference between a leader and a manager is that the leader actually helps people grow with him. And it's not the case of a manager. This is the key difference. So obviously, when the leader is growing, the leader is allowing all the team members to grow along with it. Yes, that's the difference of a leader and a manager. Yeah. So moving to the next one, the next slide says, it talks about the book. And when it describes about the levels of leadership, it talks about the leadership maturity actually. So from leadership based on position, which means level 1, to be a leader by developing other leaders, which means level 5. The John Maxwell book, it is, and Mr. Maxwell, he talks about, organizational needs, which are more at level 5 leaders, and how every individual can get there. Of course, not everyone gets there, but how one can fulfill the requirements by staying on, the first level, and then improving for the next one, and then growing to the third one, fourth, and then reaching to the fifth one. So that comes by the passage of time, by the efforts, by the learning that someone attains, and by the effort someone put, by the pain someone goes through, and by the impartation of knowledge that he or she has as a leader. And that is from personal growth to the organizational growth to the people growth, and then coming to the level of respect. So this is how he talks about in detail in the book. Usi mein se, we are just picking up, the crux, and it's like discussing in 2 hours time. Otherwise, it is 3 days course. So let's talk about the first level, the level of position, which is also known as the level of rights. और इस पे कुछ हम बात कर लेते हैं. So इसमें हम देखते हैं कि very first level already आप सभी ने देखा, और इस पे बात भी की, and you guys know a lot about this, कि इस positional level पे अमूमन people are like the boss. Leadership is like being boss is being a leader, and people only follow you because they have to, कि boss हैं, और अगर नहीं करेंगे follow तो consequences होंगे. इसलिए so your influence does not extend beyond job descriptions. आप यहाँ पर जरूर add कीजिएगा what you think about it and how do you take this level of position, this level of leadership. So कोई example आपके सामने आए, कोई challenge, because इसी पे रहते हुए people can grow, but people also stay sustained. Sometimes they don't grow. And to them, boss हो जाना is enough. To them, ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, और उसमें आकर वो grow नहीं कर पा रहे होते हैं. जबकि उनके subordinates इस चीज़ को जब देख रहे होते हैं, तो of course they follow him, but उनके अपने दिलों में they don't have true aspect, वो perspective नहीं आ पा रहा होता जिसमें they consider that person as a leader, और वो सिर्फ यही जानते हैं कि he or she is a boss and he is on this position, और वो भी अपनी उस position पर ही रह रहा होता है. और position का मतलब job description, वो उस तक रह रहे हैं, मुझे ये काम लेना है जैसे भी कोई कर रहा है, मुझे रिजल्ट चाहिए, ये डेडलाइंस हैं, ये मीट होने चाहिए हैं. So this is how it is. So it is the ground floor of leadership from which we need to build our foundation. So अगर आपके पास positional authority है, someone saw potential in you, तो ही आपको दिए वो authority. लेकिन यहाँ पर आपके पास opportunity है that you can grow. So if any one of you wants to add something in it. Starting with this, the hierarchy of the leadership levels, most of the leaders actually जो कहते हैं कि मैं leader हूँ, actually वो leader नहीं होते.
we are actually, a boss on a position. Hmm. What I, did till now in my career, like my academic time या professional working का so most of the week Hmm. मैंने अपनी लाइफ में अगर मैं इसमें कुछ टाइम में सोच रहा था मेरे जितने भी लीड जो मेरे बॉस गुजरे हैं उनमें से तकरीबन गुजरे हैं कुछ 7 से 8 लोग Mm-hmm. लेकिन उनमें से 2 ऐसे लोग हैं जिनको मैं पोजीशन से ऊपर देख रहा हूँ Hmm. अदर देन दैट सारे पोजीशन पे उससे ऊपर नहीं देख किसी भी हवाले से Right. I don't know if you could hear or not online, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर तैमूर मौजूद हैं and he says that so far मैं सुनते हुए अपने mind में recall कर रहा था and he found out कि like 2 of the people he has in his life, as his seniors and the leaders, तो उन्होंने अभी तक अपनी लाइफ से इनको ये शो किया कि दे आर द लीडर्स, वो अपनी पोजीशन से ऊपर इन्हें दिखे हैं, लेकिन अदरवाइज जो है रेस्ट ही सॉ देम कि वो अपनी पोजीशन पे ही हैं। मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, जैसे लाइक शायदा नाम है, शाइस्ता अरशद साहिबा, आई थिंक शी अनम्यूटेड एंड शी एडेड टू इट, कि जिस तरह से लाइक वो मैनेजर और लीडरशिप का डिफरेंस है, तो मोस्टली इस स्टेज पर अगर कोई इस पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाता, क्योंकि पोजीशन पर तो आपको ले लिया गया, लेकिन फ़ायदा उठाने का मतलब अब नेक्स्ट आपने प्रूव करना है। सो अगर कोई प्रूव नहीं करता है योरसेल्फ बीइंग अ लीडर, तो he or she remains the manager, actually they are not a leader. तो ये यहाँ की इसकी बात है। If someone wants to add to it, कोई और अपना experience, तो they can, otherwise we move to the next slide. So this positional level is actually the opportunity for you that you continue learning, आप वो भी फायदा उठाएं, you continue building up relationship with people, और फिर इससे आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ मूव करें। अब इस पोजिशनल लेवल के अपसाइड्स भी हैं और डाउन साइड्स भी हैं, तो मैं मोहम्मद सलीम साहब से चाहूँगी कि सर साथ में आप अपसाइड और डाउन साइड की बात भी करते जाएं, और साथ में आप जो शेयर करना चाहते हैं प्लीज़ वो भी कीजिए। थैंक यू मैम, वेरी मच मैम। अच्छा, बस मैं वो जो पीछे वाली स्लाइड थी बेसिकली उसी के हवाले से ही बात कर रहा था कि जो पोजीशन है, जैसे मैनेजर और लीडर की बात हो रही है, तो लीडर बेसिकली हम उसी को कहेंगे जो अपने साथ लोगों को ग्रो करेगा। मेरे साथ अगर 23 मेंबर्स हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ लिंक्ड हैं, और अगर मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं खुद तो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये एग्जांपल दूं अभी की, अगर मैं खुद CHRP एक प्रोग्राम कर रहा हूं, उसके लिए लर्निंग कर रहा हूं, और मैं अपनी टीम के लिए नहीं सोच रहा, तो इट मीन्स कि शायद मैं कहीं पर सेल्फिश हूं और मैं फिर लीडर नहीं हूं। मुझे अपने उन तमाम लोगों को रिकमेंड करना है, और रिकमेंड करने के बाद नॉकिंग करनी है कि आपको इस लेवल के ऊपर ये 3 कोर्सेज में से कोई भी एक कोर्स करना चाहिए, चाहे आप इसको ऑनलाइन करें चाहे फिजिकली करें। तो मैं आपके लिए जो है वो मैनेजमेंट से बात करके आपके लिए टाइम स्पेयर करवाता हूँ। तो ये चीजें आपको अपनी टीम के अंदर सोचनी होती हैं अगर आपने लीडर बनना है। दूसरा ये है कि जब आप बाज़ औक़ात, ऑब्वियसली जो HR है वो फील्ड ऐसी है कि आपको हर एम्प्लॉय के साथ कहीं ना कहीं बात करनी होती है। कुछ बहुत अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं आपको, लेकिन कुछ लोगों का अपना जो है एग्रेशन भी होता है। जब कोई आपकी तरफ से कोई हार्श लेटर उनकी तरफ जाए, या कोई मैनेजमेंट का डिसीजन जाए, या कोई पॉलिसी के अंदर ऐसा चेंज आ जाए जो एम्प्लॉयज़ को जो है वो पसंद ना हो, ऑब्वियसली हम क्योंकि बेसिकली दोनों तरफ होते हैं, एक तो टेक्निकल जो है वो हम यानी पार्टनर होते हैं मैनेजमेंट के, और उसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स होते हैं उनको भी देख रहे होते हैं। तो एम्प्लॉयज को कुछ बातें हमारी पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती, ये टोटली अग्री इस पे, मतलब कोई दूसरी चीज नहीं है। तो जो रिस्पॉन्स करना है ना आपको एम्प्लॉय की सख्त बात का, जब आप वो सीख जाते हैं कि किसको किस वक्त क्या रिस्पॉन्स करना है और किस तरीके से करना है, और चूज ऑफ वर्ड्स क्या होने चाहिए आपके, आई थिंक उस वक्त आपको ये फील होता है कि नाउ यू आर गेटिंग लीडर। और ये बातें मैं कहना चाहूँगी कि जो आपने कही पोजीशन पे रहते हुए, दिस इज़ द लेवल ऑफ परमिशन जहाँ पर आपका रिलेशनशिप है जो लोगों के साथ बिल्डअप हो रहा है। और ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट पीपल्स पीपल,
तो आप जितने भी आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, यू आर एक्चुअली देयर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर एक्चुअली देयर कोऑर्डिनेटर्स, एंड यू आर द वन जो ऑर्गेनाइजेशन और उनके दरमियान ब्रिजिंग कर रहे होते हैं. सो बहुत चैलेंजिंग भी हो रहा होता है. और वहाँ पर आकर लीडरशिप एबिलिटी आपकी, दैट हाउ गुड of a leader you are by giving them permission and knowing about the people and knowing their challenges, knowing the things that they are facing, and knowing their skills and abilities that could be helpful for the organization and how you can help them to enhance. और जैसे आपने बहुत अच्छा रेफरेंस दिया कि अगर मैं इसी पोजीशन पर रह के सिर्फ अपने लिए सोचता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ उस तरह से रिलेशनशिप नहीं रखता जिसमें आकर पीपल डेवलपमेंट हो, और मैं उनके बारे में नहीं सोचता, तो ये I'm just about the position. So let's go to the next slide, जहाँ हम इसके अपसाइड और डाउन साइड ऑफ पोजिशन देखेंगे. सो अभी तक बात हो रही है, सो पोजिशन इज ऑल नॉट ऑल अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बट इट हैज द पॉजिटिव थिंग्स एज वेल. सो हम उनको भी देखते हैं और उसके साथ डाउन साइड को भी देखते हैं. तो क्विकली इस स्लाइड को मैं करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल्स की जो अपसाइड और डाउन साइड आएंगे, तो अभी से मैं चाहती हूँ कि आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें. सो लेट्स सी द अपसाइड ऑफ पोजीशन. अ लीडरशिप पोजीशन इज यूजुअली गिवन टू पीपल बिकॉज दे हैव लीडरशिप पोटेंशियल. सो जब आपको इस पोजीशन पे लिया जा रहा होता है, तो यकीनन ये देखा जाता है कि आपके अंदर ये पोटेंशियल पाया जाता है. सो यू आर बीइंग ट्रस्टेड ऑन. और इसका नेक्स्ट अपसाइड, अ लीडरशिप पोजीशन मीन अथॉरिटी इज रिकग्नाइज्ड. सो आप जब इस पोजीशन पे हैं, तो ऑफ कोर्स यू गॉट सम अथॉरिटी, और उस रेलेवेंट अथॉरिटी को आपकी पोजीशन की वजह से रिकग्नाइज किया जाता है. सो अदरवाइज कोई भी उठ कर कहे और उसकी वो पोजीशन ना हो, तो उसकी बात एक्नॉलेज नहीं की जाती और वो नहीं सुनी जाती है. पोजीशंस आर गुड थिंग एज वेल हियर. और फिर इसी तरह से अ लीडरशिप पोजीशन इज एन इन्विटेशन टू ग्रो एज अ लीडर, बिकॉज यू गॉट द अपॉर्चुनिटी, जैसे बात की है मोहम्मद सलीम मुर्तज़ा साहब ने. और फिर जब लगेगा कि इनके साथ के कोई लोग ऐसे हैं जो उस पोजीशन पे वो रेलेवेंट ट्रेनिंग या लर्निंग ले सकते हैं, तो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन दे विल बी एलिजिबल एंड इनकॉर्पोरेटेड विद द ट्रेनिंग. और फिर इसी तरह से अ लीडरशिप पोजीशन अलाउ ऑप्शनल लीडर्स टू शेप एंड डिफाइन देयर लीडरशिप. सो हो सकता है कि कोई ऑप्शनली उस पोजीशन पे आ गया, उसने जस्ट उस पोजीशन को उस टाइम पर लिया कि ठीक है ये मेरी ज़रूरत है, और वो उस जॉब में आ गए हैं, लेकिन अब फर्दर ये ऑप्शन नहीं रहता. फर्दर उन पे डिपेंड करता है कि वो इस ऑप्शनल लीडरशिप में होते हुए, इस पोजीशन पर होते हुए खुद को शेप कर सकें और अपनी लीडरशिप को डिफाइन कर सके फर्दर. सो डाउन साइड में क्विकली आई विल ओनली रीड, बट आई वुड लाइक फॉर यू कि आप इसको सुनते हुए, if you want to add something, please go on for this. Downside of positional leadership is leaders who rely on position to lead often devalue people. They don't believe in their people. If you agree or don't, if you want to elaborate, please stop me and you can. Next is downside of position is positional leaders feed on politics. They focus on control instead on contribution. Positional leaders place rights over responsibilities. मोहम्मद सलीम साहब ने मेरे सेकेंड पॉइंट पे अनम्यूट किया था. जी सर. Positional leaders feed on politics. They focus on controls instead of contribution. मैम, मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों पे ही बात करना चाहूँगा. मैंने एक कहीं कोटेशन पढ़ी थी, किसी ने बहुत अच्छा लिखा था इसके बारे में कि टाइटल्स डोंट मेक लीडर्स, एक्शन डू. ये जो टाइटल्स होते हैं, बाज़ औक़ात क्योंकि हमारे यहाँ ये कल्चर पाया जाता है, सॉरी टू से मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ, कि हमारे यहाँ कुछ इनकम्पिटेंट लोगों को किसी सिफारिश या किसी ऐसे वजह से लाके ऊपर बिठा दिया जाता है और कम्पिटेंट लोग नीचे होते हैं. लेकिन ये बड़ी हौसला अफजा बात मैं करने लगा हूँ कि जो इनकम्पिटेंट होते हैं, अगर तो वो शार्प लर्नर्स होंगे तो वो अपने टीम मेंबर से सीख कर अपने आप को इस काबिल बना लेंगे. और अगर जो नहीं बना सकेगा, फिर वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगा. या तो वो उस सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देगा, या फिर वो खुद ही वहाँ से क्विट कर जाएगा.
तो ये जो Yeah. टाइटल्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी जगह इनकी अहमियत है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन उस टाइटल को बरकरार रखना और वहां पर स्टेबल रहना ये आसान बात नहीं होती है जब तक आप यानी रूट कॉज एनालिसिस करके नहीं आए होते, रूट से नहीं आए होते, आपको वो तमाम छोटी छोटी चीजें बिजनेस की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसके फंडामेंटल्स नहीं पता होते, तब तक आप एज लीडर जो है वो ना खुद ग्रो कर सकते हैं और ना ही आप अपनी टीम को ग्रो करवा सकते हैं। Agree with that. Thank you so much. I go on with the next point. Positional leaders place rights over responsibilities. Positional leadership is often lonely. Turnover is high for positional leaders. People quit people, not companies. Positional leaders receive people's least, not their best. So I think ये जिस तरह से मोहम्मद सलीम साहब ने elaborate किया first 2 points को, उसी में ये बात आ भी जाती है कि ऐसे लोगों के साथ फिर लोग काम भी नहीं करना चाहते हैं, और जो skillful नहीं है, जो अपनी leadership को appropriately show नहीं कर पाते हैं, और वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, और सिर्फ टाइटल की बेस पे ला के बिठा दिए गए और उनके पास वो required ability, skill या learning नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा देर सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो कुछ कर सकते हैं, अगर वो सीख जाते हैं, तो यस दे कैन होल्ड द पोजीशन और फिर वो वहाँ ग्रो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसों के साथ टर्नओवर भी हाई हो जाता है, पीपल स्टार्ट क्विटिंग देम, एंड ऑल्सो यू नो उनके साथ लोग अपना बेस्ट देते भी नहीं और दे पाते भी नहीं है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड कि हम इस पोजिशनल लेवल पर रहकर अपना बेहतरीन कैसे दे सकते हैं। सो डोंट पुश पीपल, हेल्प देम एंड टेक एन इंटरेस्ट इन देम. That is what we can do. And also don't expect your people to come to you. You must initiate things to earn their respect. That is how we can improve on this. ये साथ में add किया गया है. And then there are a few laws of leadership जो यहाँ पर implement किए जा सकते हैं to do the best or to do your better at this positional level. These laws are from the 21 Irrefutable Laws of Leadership, a book by John C. Maxwell. उनमें से है, so law of lead ये बताता है कि to unlock your effectiveness, you must commit to developing yourself as a leader. And then law of process says recognize that developing yourself as a leader is a lifelong process. So positional level pe rehte hue, you know, it's a lifelong process that you continue learning and growing, and you don't think कि मैंने सब सीख लिया. And then law of navigation says recognize your limits. You might be able to steer the boat, but you are not yet ready to chart the course. So navigation is important. A leader is the one who goes the way, knows the way, and shows the way. Then we move on to the next slide, talking about the permissional leadership, the level of relationships. Isme why you become a permissional leader, because you have started giving permission to people, you have you know, started moving to people, started knowing them. और HR के लोग जो हैं, of course इनके साथ बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है, और बहुत ज़्यादा लोग निगाह में रखते हैं कि अगर कुछ खराबी हुई है तो इसी की वजह से हुई होगी, या इसी ने मेरे खिलाफ इस तरह बात की है, और लाइक you know the as you just mentioned, कोई पॉलिसी बना दी गई है या कोई लेटर आपकी तरफ से चला गया है. But otherwise, if you have good relationship with people and people know that what type of a person you are, तो वो ये जानते हैं कि आपने आपकी responsibility है जो पूरी की है, even if something you know जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जाती भी है, कोई ऐसा लेटर जाता भी है, still they follow you, still they know that who you are, and they know the integrity that you have in you, and you know, regarding your position. So that is what you
what you are, and that is how they know you. So they trust you, they believe in you, and at this point people follow you beyond your stated authority. So it's not about the position alone. Now it is about you being a person to them, and how you have interacted with them, how you have built up a connection with them, and how you are growing in that relationship with them. So this leader is not relying on positional authority anymore, but they are influencing people through the relationship. So building strong relationships enable people to follow you instead of simply following orders. इस पे आके अपसाइड एंड डाउनसाइड्स की बात करते हैं. तो आई वुड लाइक फॉर you, any of the participants, कि आप जरूर इसमें take part करें, and if you'd like to read the upside of permission, यानी permissional level, जो second tier of leadership है. Makes work more enjoyable. A shift from me to we. Right. इसको एक्सप्लेन मैम इस तरीके से करूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी काम के अंदर है और आप उसको खुद लीड करते हैं अपनी टीम के साथ मिलकर, तो मज़ा तभी आता है. यानी आपने कोई ऐसा काम है जो आपने टीम को दे दिया, और अगर वो टीम ने कर लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकी तो आपने भी नहीं किया, तो फिर ये वो लीडरशिप नहीं है. टीम ने कर लिया, ये आपने उनको सिखाया या उनकी अपनी एबिलिटीज उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन उस काम को करना जो वो नहीं कर सकते, वो आप लीड फ्रॉम द फ्रंट आते हैं और उस काम को करके दिखाते हैं. ना सिर्फ खुद करते हैं बल्कि अपनी टीम को भी बताते हैं. तो बेसिकली ये जो है आ शिफ्ट है फ्रॉम मी टू वी. Great. Anyone? If somebody would like to read the next one, explain it as well. I believe none of you have kept the जी साबित. device on, और आप खुद के ही चले गए हो. Yeah, जी फराज खान साहब. मैं इसमें से थर्ड वाले को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ओपन अप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अप डाउन साइड टू साइड. कि आपकी जितनी भी टीम है, मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि आपकी जो टीम है, आपको उनके साथ कम्युनिकेशन में हर वक्त रहना चाहिए. इससे आपको पता लगता है कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, और क्या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उनको गाइड करने की ज़रूरत है, और आपकी टीम का कौन सा मेंबर कहाँ पे लैग कर रहा है, आप उसको वहाँ पे अपलिफ्ट कर सकते हैं. मैंने ये गेट किया इस पॉइंट से. Right. Thank you. Next, please. जी शाइस्ता The साहब. value, the value of each person is realized by leaders and followers. Mutual respect is gained. So, since this is all about making relationships and communication, open communication, so this is the level जहाँ पे leaders भी and followers, they realize the value and significance of each other. तो वो एक authority के बजाय वो एक mutual respect का जो element है वो बीच में आ जाता है एक दूसरे after they know each other. Yeah. Thank you. Next, please. जी मोहम्मद. सेकंड आई थिंक मिस हो गया. सेकंड मैं कर देता हूँ. इंक्रीज द एनर्जी लेवल थ्रू पॉजिटिव रिलेशनशिप्स. और इसी को मैं साथ है कि जो डाउन साइड है उसको भी पढ़ देता हूँ. कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अचीवर्स बिकॉज बिल्डिंग रिलेशनशिप्स टेक्स टाइम. ये बिल्कुल ठीक बात है. ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो रिलेशनशिप्स जो है ये फौरन नहीं बनते. ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपको टाइम लगता है. इट मे टेक्स मंथ्स, इवन समटाइम इट टेक्स ईयर्स. तो जब तक आपका रिलेशनशिप में ट्रस्ट डेवलप नहीं होता और आपको आपके सबॉर्डिनेट को, आपके टीम मेंबर को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं यकीन होता कि ये फर्द हमारे लिए जो है वो फायदेमंद होगा, ये हमारे लिए बेहतर सोचेगा, तब तक जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड नहीं होते और फिर आपके साथ काम करने का मजा भी नहीं आता बाकी लोगों को. एग्जैक्टली. और इवन आपके लिए भी ये चैलेंजिंग होता है कि आप अगर अचीवर हैं और दूसरे उस स्पेस पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए भी डिफिकल्ट होता है. या सो नेक्स्ट प्लीज.
The last one from upside of permission and also from downside of permission. Upside is nurtures trust. So similarly with open communication, mutual respect, the element of trust is built between the team. So everything is not about position anymore. It's about trusting that the leader is making the right decision and the followers are also giving the right advice and following in a true manner. Yeah. So it's about trust. Yes, it is about trust. Thank you. Now, the downside of permission, the first one can appear too soft for some people. Some may not want to make the hard decision. It was done by Faraz Khan. Then Muhammad Salim Saab has done the second one. The third one is permission leaders can take advantage of people may mistake kindness for weakness. So यहाँ पे आके challenge आता है कि when you start building relation with people, तो अक्सर ऐसा होता है कि नहीं वो मेरी हर बात ही सुन रहे हैं. So I believe आप लोग को challenge हो रहा होगा. Would you like to relate any story on that? Any incident that happened with you as HR person or anything? Because that becomes challenging too. आपकी position को challenge आना शुरू हो जाता है इसके साथ. Or maybe people may cause a challenge to that. Anything? So it's a downside of permissional level where, people may mistake kindness for weakness. You may be kind with them. They might think it's your weakness. Anyway, if you don't want to say anything, let's go to the next one. To be effective, you need to be open. And when you be open with people, तो कई बार ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये लोगों को अच्छा नहीं लग सकता. So your integrity can be a challenge to them. You're being sincere and loyal to the organization, and at the same time being in good terms and relationship with your peers. That can be a challenge. And to be effective, you have to be open, and this is a downside. Then difficult, you to deal with the whole are not naturally likable. And next is forces you to deal with the whole person, the good, the bad, and the ugly. So ये भी है, not all the times, but yeah, it is a downside as well कि जैसे भी लोग हैं आपको उनका सामना तो करना पड़ता है. जी मोहम्मद सलीम साहब. मैम मैं सॉरी मेरी कॉल आ गई थी तो मैं बीच में आपको नहीं कर सका. अच्छा मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ बिकॉज हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं तो इस स्लाइड को. तो रॉबर्ट ए हेलन ने एक लाइन कही थी, अवॉइड यस पीपल, आई विल नेवर ग्रो एनीथिंग, सॉरी आई विल नेवर लर्न एनीथिंग फ्रॉम अ पर्सन हु ऑलवेज अग्रीड विद मी. यानी अगर कोई आपका कंपटीटर ही नहीं बन रहा, यानी कंपटीटर पॉजिटिव सेंस में मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई आप टीम मेंबर में ऐसा फर्द नहीं लेते जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, तो फिर आप उससे कभी लर्न नहीं कर सकते. फिर आप जिस जगह पर हैं शायद आपको उस जगह से ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो अपनी टीम के अंदर मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ किसी ऐसे फर्द को ज़रूर लें जो नेचुरली क्रिएटिव हो, सोचता हो इसके ऊपर, और नई चीज़ें करने का जो है ना उसको फन आता हो, और आप उसको सपोर्ट करते हैं. यहाँ जो दो तीन चीजें यानी आपने जो डाउन साइड में पढ़ी हैं बेसिकली वो इससे रिलेट कर रही थी, दैट्स व्हाई मैंने जो है ना ये कोटेशन आपके सामने रखी. राइट, थैंक यू फॉर योर इनपुट सर. और मंसूर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सलीम साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की. तो एक और कोटेशन है कि व्हेन टू पीपल एग्रीड ऑन द सेम थिंग वन इज यूजलेस. ठीक है, बात नहीं या सर बहुत जबरदस्त बात की आपने, और ये वाकई ऐसे है.
Yeah, I'm sorry as we are sitting in the same room. So if we are unmuted at the same time, it causes a bit difficulty. So थोड़ा सा challenging हो जाता. Yeah. So as we are done with the upside and downside of permission, here, how can we sustain and how can we gain at this level? Ismeha, you must get to truly know yourself before you can openly get to know others. How much would you agree with this one? And what do you understand from here, from the statement? How can you gain people's permission? How can you build up relation? How can you strengthen your connections? मैम वो कहते हैं ना कि रिश्ता कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है और वो होता है ट्रस्ट. तो ये जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक कोई भी चीज आगे नहीं चल सकेगी. Right. And the given statement here says also, आपने बहुत अच्छा input दिया sir, thank you. It says that before you get to know others, you have to know yourself as well. So बहुत मामलों में कई मर्तबा like हम बहुत सारे लोगों के साथ easy नहीं हो पाते हैं. So it's really important to know yourself, be aware of you know, your weaknesses and your strengths. So HR person hote hue, many times, you know, when you are introvert और HR में है और आपको लोगों के साथ बात करनी है, you have to be a social person at the same time and you have to know about them. So it is really important कि आप इन बातों को जानते हुए, that could be your weakness to sustain on the position, और आप लोगों की you know, permission gain कर सकें, you can build up a relationship with them. It's important to know about yourself. Sir, आपका mic mute unmute हो गया. If you want to add something. Acha, thank you. Then develop a leadership style that is focused on people rather than task. So position पर आकर sometimes you just you know, sometimes क्या हमने पीछे इसके बारे में बात कर ली है कि it's just, you know, staying as a manager, not as a leader in you. तो अगर आप लोगों के साथ बात करते हैं और सिर्फ काम की करते हैं, not other than that, हंसना बिल्कुल मना है आपके यहाँ, और कोई आपके ऑफिस में आ नहीं सकता है, they are scared of talking to you other than work, so that could be quite challenging. इसलिए develop a leadership style that is focused on people rather than task. Treat others as you yourself want to be treated. Also, praise along with words of encouragement are important. Be your team's chief encourager. I remember last session जो मैं member के साथ हुआ last week में exit it was exit management, right? So उसमें ये बात थी कि even last interview जो कोई exit हो रहा है उसके साथ भी जब किया जाए तो बातचीत बड़े अच्छे से हो रही हो, तो फिर अंदाजा कीजिए कि how much important it is to praise along with the words of encouragement, and especially coming from an HR person जो सब बातों पर नजर रखे हुए है, निगाह रखे हुए है, you are the camera in the company or organization. So इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे about the praise, the words of affirmation, the encouragement thing, how much it affects, how much do you think HR में और लोगों की परमिशन गेन करने के हवाले से anything? मैम मैं बात करूँ? जी प्लीज. मैं सॉरी थोड़ा सा वेट करता हूँ, ऑब्वियसली और भी मेरे साथ जो हैं वो लोग हैं इस कोर्स में, तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं उनको चांस दे दूं, बट फिर जब कोई नहीं बोलता तो फिर मुझे अपना माइक जो है वो अनम्यूट करना पड़ता है. अच्छा, बहुत से ऐसे पहाड़ होते हैं जो आप अपनी टीम के बलबूते पे सर कर जाते हैं, बहुत से Right. ऐसे टास्क होते हैं जो मैनेजमेंट आप पे ट्रस्ट करती है, ऑब्वियसली
वो आप पे ट्रस्ट इसलिए कर रही होती है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है और आप उसके साथ काम कर लेते हैं और बहुत से नए चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं और जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक पहुंच जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी टीम को इंकरेज करते हैं। फर्द वाहिद कुछ नहीं होता, एक और एक 11 होते हैं, और ये बात जिसने समझ ली उसको मतलब कोई हरा नहीं सकता। तो आप अगर अपनी टीम को, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी और बात की थी कि अगर आप अपनी टीम के अंदर किसी ऐसे फर्द को रखते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और उसको इनकरेज करते रहते हैं, तो यकीन जानिए कि आपके बहुत से मसाइल वो आपके हल कर देता है। आप एक स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, किसी एक एंगल से जो है ना वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। बट जब आप टीम में बैठते हैं 5 7 10 12 लोगों में बैठकर किसी मुश्किल को, जो नया टास्क होता है, जो नई रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट की या हालात की या पॉलिसीज की, जब आप वो डिस्कस करते हैं तो कोई ना कोई इनपुट उनकी तरफ से आता है, शायद आपका अपना जहन काम करना शुरू कर देता है। तो ये टीम की एनकरेजमेंट, यानी टीम तभी आपके साथ पार्टिसिपेट करती है जब आप उनको एनकरेज करते हैं। आप अगर मैनेजर हैं और किसी को अलाउ नहीं करते अपने ऑफिस में आने के लिए, अगर वो कोई अपना इनपुट देता है और आप उसको फौरन से जो है ना वो कहते हैं कि आपने ये बात क्यों की, हमारी तो पॉलिसी ये है, हम तो ऐसे चलेंगे। आप बिलीव कीजिए, मैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं बड़ी रवानी से आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कि यार हमारी पॉलिसी ये कहती है, आप इसको भी साइड पर रखें, सोचें अगर आप मेरी जगह बैठे होंगे तो क्या डिसीजन करेंगे। तो वो कुछ ऐसे डिसीजन यूनिक्स आते हैं, कुछ ऐसे जो हैं वो आइडियाज यूनिक आते हैं जो आप प्रेजेंट करते हैं, और फिर मैनेजमेंट जो होती है वो आप पे ट्रस्ट करती है और आपको कोई ना कोई नया चैलेंजिंग टास्क मिलता रहता है। थैंक यू। Thank you, sir. If anyone would like to add anything, इसके साथ ही हमारा last point है यहाँ पर, how to gain people's permission. It is important to balance care for team members with candor. और आई थिंक कि यहाँ पर मोहम्मद सलीम साहब ने जो बात की है वो साथ में कि सिर्फ टीम के अंदर नहीं कि आप बैठे हुए हैं और आप उन लोगों से कोई भी आइडिया लेते हैं, कुछ भी ऐसा इनपुट, और वहाँ पर वो बताते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी साफ गोई के साथ आपके सामने आ जाती हैं और आप बहुत साफ गोई के साथ दूसरों के साथ कह सकते हैं और कर सकते हैं। सो आप पीपल्स परमिशन के लेवल को इस तरह से गेन कर सकते हैं कि आप अपनी केयर टीम मेंबर्स के साथ बैलेंस रखें, लेकिन साफ गोई के साथ। सो लेट्स मूव ऑन टू the next slide, which talks about the laws of leadership जो इस permission level पे implement हो सकते हैं। उनमें law of influence है, which says the true measure of your leadership is your influence. जितना आपका influence लोगों पर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है आपकी leadership ability और skill उनके सामने ज़्यादा आ रही है। The law of addition, add value by helping and serving others, focus on people, not systems. And then law of solid ground, which says be trustworthy, इस पे हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। Law of magnetism, it says be the type of person you want to attract. And the law of connection says work on relating to people. Law of buy-in says work to get people to buy into, which means to let them trust you. So let's talk about level 3. It is the level of production, the level of results, where people follow you because what you have done for the organization. और इस level पे होने के लिए you have to be self-disciplined, a strong work ethics, with strong work ethics, organizational skills जो हैं produce करने के हवाले से, these should be in you. Or this is the level where you are making things happen and getting results. And this is where you show your ability to produce for themselves as well as for the team. Produce for yourself and for the team. And this level attracts other producers and create an environment for collaboration. इसके upside और downside पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। And here I would like for you कि आप अपना input दें। शाइस्ता साहिबा, would you like to open up the forum? You want me to read the upside of production? Also, not only one, not only the first one, but all, and talk about these, please. Okay. The upside of production, it is first is it gives credibility to the leader. Obviously, the leader, when being productive,
when there's already trust and mutual respect, तो उनकी credibility जो है वो improve होती है. एक क्या कहते हैं, recognition होती है कि मतलब एक leader की एक जो proper पहचान है वो improve हो जाती है उसके साथ. और जैसे जैसे they become more productive, then it is models and sets the standard for others visually. Your productivity is the example that sets the standards for the team. Obviously the leader is the one जिसको followers देख रहे हैं, तो वो एक रोल मॉडल के तौर पे होते हैं कि ये it is not about the written tasks, it is actually what the leader is doing, जो what sets the standards. जो टीम ने देखना है वही उसको फॉलो करना है. It brings clarity and reality to the vision. Communicate the vision through action. A vision is a normally जी vision statement क्या एक organization की या एक project की भी एक proper नंदी होती है vision. It is something जो बस लिखा है, लेकिन it is the leader who makes sure कि आपकी टीम के और जो आपके vision के जो alignment है वो हो जाती है. वो अपने एक्शंस के थ्रू उस विजन को जो है क्लियर करते हैं, ताकि वो सारी जो टीम है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्क फोर्स है, उनको उस विजन का पता हो कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और उसको वो एक ड्रीम को उस एक्शन के थ्रू उसको रियलिटी में जो है ना कन्वर्ट करते हैं. तो वही एक्चुअल में जो लीडर ये कर पाता है उसी को हम ये कह सकते हैं कि वो एक प्रोडक्टिव लीडर है. तो प्रोडक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, sorry, I missed something. Solves a multitude of problem. Leadership is problem solving. Obviously, leader is the one who solves all the problems. He finds actually the problems might not be identified already. So leader is the one जिसने hidden problems को पहले ढूंढना है और फिर उनको solve करना है, ताकि एक smooth transitioning उनकी टीम की भी हो और उनकी भी growth हो साथ साथ. Leadership production is the foundation for team building. Everyone likes winning. Everyone like accomplishing something big. So जैसे हमने पहले mention किया है कि it is the team जिसको लेके leader ने साथ चलना होता है, और वो production एक productive leader वही होता है जो अपनी team building के ऊपर focus करता है. उसने अपनी सारी strategies, अपनी tactics जो हैं वो ये देखना है कि मैं अपनी टीम के बेस के ऊपर इस चीज को लेके चलूं और उनको भी बिल्ड करूं. तो उसकी फाउंडेशन जो होती है वो टीम बिल्डिंग होती है, और उसी की बेस के ऊपर वो लीडर जो है ना प्रोडक्टिव होता है. Right. Thank you so much. Thank Faraz you. Khan Saab, would you like to talk about the downside of production, the third level of leadership? Would any of the other participants online like to talk about the downside of production? The points are in front of you. You just have to elaborate. Samson Tariq Saab, Taimur, Mariam, Muhammad जी Ismail Khan Saab. Ji, sir. Being productive can make you think you're a leader when you're not. You still need level 1 and 2. Yeah. जो मुझे इससे समझ आ रही है वो ये है कि आप अपने आप को प्रोडक्टिव अगर आप हैं तो आप ये नहीं समझ सकते कि आप लीडर हैं जब तक कि आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप से गुजर के नहीं आए, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि हमें स्टेप वाइज जो है ना हर चीज़ को लेना पड़ता है. हम Yeah. एकदम से स्किप नहीं कर सकते. अगर हम प्रोडक्टिव हैं तो हमें फिर भी पोजीशन से होके आना पड़ेगा. Yes. और सेकंड है प्रोडक्टिव लीडर्स फील अ हैवी वेट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिजल्ट्स. इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है लीडर के ऊपर सारे रिजल्ट की जो बेस करता है कि जैसा लीडर अपनी टीम को वर्क देगा, जो वो उन्हें काम देगा वो इंजाम देंगे आगे. अगर वो अच्छे से उन्हें करवाएगा तो जाहिर सी बात है सारा क्रेडिट उसके ऊपर आएगा कि अगर अच्छा रिजल्ट आएगा. तो अगर नहीं आएगा तो फिर भी उसका जो है ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर पर ही होगी. थर्ड पॉइंट है रिक्वायर्ड मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजंस. ये सबसे मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी पॉइंट होता है, ये फेज होता है लीडर की जिंदगी में, क्योंकि Maybe you have gone mute, sir. Tariq Saab, I can't hear you. हेलो.
Hello. जी, yes, you are audible now. जी, last हाँ. one. Demands continual attention to level 2. मतलब कि ये एक लीडर की पूरी तवज्जो चाहता है ये स्टेज, क्योंकि जब आपको प्रोडक्टिव होना है, तो फिर आपको प्रॉपर जो है लेवल 2 से होके गुजरना पड़ेगा। आपको अपने एम्प्लॉयज का हर एक का पता होना चाहिए, आपका वो परमिशन स्टेज से आपको अच्छे से गुजरना पड़ेगा। Yeah. That's all. Thank you so much. Thank you, both of you, Shasta Saib and Samson Tariq Saab. So, how to make the most of production in leadership? इसके लिए, इस level पे sustain करने के लिए, figure out where your strengths lie and focus on these areas. और इसके साथ communicate a clear vision. This will help with team productivity. जब टीम को क्लियर विजन नहीं पता होगा तो शाइस्ता साहिबा ने ऐड किया था कि ऑफ कोर्स आपके साथ मिलकर वो उस तरह काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन अफेक्ट होती है। एंड देन encourage your people to work together. This is the foundation of building a team. And also focus on areas with the highest return and never lose sight of the fact that results are your goal. The laws of leadership at the production level, उसमें law of respect है, magnetism है, picture, victory, big mo, which means big momentum. आप अपने work pace को develop करते हैं, it's your good friend. In fact, it's written here, your best friend. Then law of priorities. You sit at this level because if you are productive, you are a person with priorities. And then law of sacrifice, buy-in, which is a law of trust. Going to the fourth level, और उससे पहले हम 2-3 मिनट की break लेंगे. 3 minutes enough, sir? So just 3 minutes break and then we are coming back. Please आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए. And now I would like for you कि आप में से कोई इसके बारे में बात करें. Thank you. After 3 minutes we are getting. Let's discuss. अभी तक हमने बाकी लेवल्स पर बात की है, लेकिन let's start discussing more about this level, people development. Please start sharing your beliefs, start sharing about your experiences about people development. इस level of leadership पे बात करते हैं, reproduction, इस पे insecurities क्या हैं, how much do you find that such leaders are found around, किस कदर इस leadership को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जहाँ पे वो लोगों को develop कर रहे होते हैं. What would you like to say? We are open to share your takes on this. People development, the level of reproduction. जी सैमसन साहब. मैम इससे हमें ये समझ आई है कि एक अच्छा लीडर वही है जो अपने साथ दूसरे अपने फॉलोअर्स को भी लीडर बनने की ट्रेनिंग दे। मतलब कि जब वो चला जाए तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के पास उससे उस जितने ना सही, लेकिन यह कि उस तक जो है ना लीडर हो, मतलब कि वो अपने साथ साथ उनकी स्किल्स पे भी काम करे। बिल्कुल ठीक सर. तो आपके नजदीक इसकी किस कदर जरूरत है इस लेवल ऑफ लीडरशिप के? ये मैम हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि हर ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के लीडर्स की जरूरत होती है। Right. Thank you, sir. Anyone who would like to add anything to this? अच्छा मैम, मैं ना इसी पॉइंट के इर्द गिर्द एक और बात करना चाहूँगा। मेरे जो दोस्त हैं इसमें वो इख्तलाफ कर सकते हैं मेरी बात से। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जहाँ हम पीपल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत से मैनेजर्स ऐसे होते हैं, मैं मैनेजर का वर्ड यूज़ करूँ, लीडर का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, वो ऐसे होते हैं
जो इस बात से डरते हैं कि अगर मैं मैनेजर हूं और मेरे साथ एक डिप्टी मैनेजर काम कर रहा है, अगर वो ज्यादा मुझसे सीख जाएगा या वो डिपार्टमेंट की तमाम चीजों को ऑन करने लग जाएगा या वो प्रेजेंट कर देगा कोई ऐसी चीज और उसने अच्छा प्रेजेंट कर दिया, तो मेरे लिए तो मेरी जो जॉब सिक्योरिटी है वो थ्रेट बन जाएगी। तो वो Yeah. क्या करते हैं, वो लोगों को हमेशा कोशिश होती है कि उनको उस लेवल पर आने ही ना दें, किसी चीज को जो है वो प्रेजेंट करने ही ना दें, ताकि मैनेजमेंट को जो है ना बस नजर आए कि ही इज द ओनली पर्सन द डिपार्टमेंट जो इस डिपार्टमेंट को लीड कर सकता है। तो मैं इसको हमेशा मैनेजर कहता हूँ। हालांकि मतलब जो मैंने समझा पढ़ा सीखा बहुत से लोगों से, उसमें ये है कि अगर आप अपनी टीम को डेवलप करते हैं, जो भी हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उनके लिए बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं जैसा अपने अप्रेजल के टाइम पे सोचते हैं, वैसे ही अपनी टीम के अप्रेजल के बारे में आप सोचते हैं, तो लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। उनको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो वो ऑल्दो शायद वो गेन करते ही होंगे, बट वो कई बार इस पर सोचते होंगे कि लर्निंग इन्वायरमेंट कहाँ पर है और सपोर्टिव इन्वायरमेंट कहाँ है। तो अगर ये तीन चार चीजें, एक लीडर अपनी टीम को ग्रो करना चाहता है, अपनी टीम के लिए सोचता है, उनसे काम करवाता है और उनको उन पैरामीटर्स के ऊपर लेकर आता है जहां वो खुद मैनेजर बन सकता है, डिप्टी मैनेजर प्रमोट होकर मैनेजर बन सकता है, तो लोग फिर आपके जो है ना वो आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, वो जो मैंने पहली मिथ्स की बात की कि लोग डरते हैं इस बात से कि कहीं वो मेरी जगह ना ले दे, मेरा Hmm. पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इससे जो है ना वो हटकर है। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर ये मैनेजर बनेगा तो ऑब्वियसली मैं सीनियर मैनेजर ही बनूंगा, मैं जनरल मैनेजर की तरफ जाऊंगा, मैं डीजीएम बनूंगा। तो अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो कर रहे हैं, मैनेजमेंट आपको एक लेवल अबव रखेगी अगर आपके अंदर ये स्किल है अपनी शैडो लीडरशिप डेवलप करने का। तो ये पीपल डेवलपमेंट बेसिकली ये उसी के इर्द गिर्द घूमती है तमाम बातें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और सैमसन साहब से मेरे सवाल के बाद अगली बात थी, ये थी, और ये सवाल था कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत है, ज़रूरत तो है पीपल डेवलपमेंट की और ऐसी लीडरशिप की, बट देयर आर सो मेनी इनसिक्योरिटीज़, और आपने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बात की है। सो एनीवन who would like to share their take on this from the group? If not, let's talk about the upside and downside of people development. We have few more participants in the group with us, so I would like for them कि please आप जरूर share करें। आपके सामने है upside of people development, downsides are as well, so आप इस पे जरूर यहाँ पे बात कीजिए। I'm trying not to talk much today, still I am doing that, so that you can share your take on these. Mariam Shahid Saiba, I would like to hear from you. Muhammad Ismail Sheikh Saab. Temur, you are here. Would you like to talk about upside of people development, the first point? No? Okay. May I? Please. See, the first point is sets you apart from most leaders. Most leaders stop at the production level. Now, this is where once the leaders become productive, they have a very good team. Obviously, they're being productive. He's a productive leader, but they do not think about letting other also develop. So this is the difference. Once they realize कि अब ये next level is this कि अब हमें अपनी टीम को भी डेवलप करना है, तो दैट इज वंस दे मूव टू दिस लेवल। सो एक तो वो प्रोडक्टिव लीडर, खुद तो वो प्रोडक्टिव हो गए, एक बहुत क्रेडिबिलिटी भी हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन वंस दे रियलाइज कि अब हमें इनको भी लीडरशिप की तरफ ही लेके जाना है, तो वो उनको एज अ फॉलोअर नहीं, वो एक एज अ टीम वर्क जो है ना फोकस रखते हैं। तो दिस इज व्हाट मेक्स द पीपल दिस लेवल डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट लेवल। Right. Yes.
Should I move on to the next one or? Yes, please, you may continue. Yeah. Okay. People development assures that growth can be sustained. Helping people reach their potential will help the organization reach its potential. It's all about teamwork. Organization की success, it's not about one person's success. So leaders भी उसी वक्त successful होते हैं जब आप ये कह सकते हैं कि organization के जो goals हैं वो आपके एक हर individual के goals के साथ aligned हैं. तो जब हम focus रखते हैं कि हम लोगों को develop करें तो तभी वी कैन मेक श्योर कि जो हमारी ग्रोथ हो रही है वो इन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ में जाएगी. इट विल बी सस्टेनेबल. अब मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं हम कर सकते. अभी तो हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे लेकिन वंस वी हैव दिस पीपल एसेट विद अस जो हमें डिफरेंशिएट करता है दूसरी कंपनीज से, तो उसी सूरत में हमारी जो ग्रोथ है ना वो सस्टेनेबल होगी. तो हम उन लोगों को अपने लोगों को डेवलप करेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी अपनी कंपैरिटर से जो है ना हम compete कर सकते हैं और उसको आउट compete करेंगे हम. Yeah. Empowers others to fulfill their leadership responsibilities. Empower people and they will share the load. So leadership का एक डिफरेंस मैनेजर के साथ जिस तरह एक टिपिकल हम पढ़ते रहे हैं और शुरू से मैनेजर आपको बस बताएगा कि ये टास्क करना है लेकिन उसका क्रेडिट जो है ना वो सारा मैनेजर के पास जा रहा होता है. लीडर जो है ना वो आपको ये नहीं कहेगा, मतलब ऑब्वियसली वो भी आपको गाइड करेगा लेकिन वो आपके अंदर आपका हिडन पोटेंशियल वो ढूंढ के वो आपको कहेगा कि हाँ यू ऑल्सो हैव दिस पोटेंशियल एंड यू कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो लीडर क्या करता है वो लोगों को एम्पावर करता है. वो अपनी जो पावर उसके पास है वो उस पावर को डेलीगेट करता है ताकि मिल के वो लोड सारा जो है ना वो शेयर करें और फिर क्रेडिट भी ऑब्वियसली सारों को ही जाता है. Empowers the leader to lead larger, gives you more time to think, envision and strategize. Obviously, जब आपका फोकस जो है वो पीपल डेवलपमेंट पे आ जाता है तो वो जो लीडर है उसका भी एक जो उसकी पावर जो है वो भी बढ़ जाती है. वो अब कुछ फॉलोअर्स का वो लीडर नहीं है, वो अब एक प्रॉपर लीडर्स का लीडर एक वो बन जाता है बंदा. तो उसका एक जो विजन है वो ब्रॉड हो जाता है और उसके पास ज्यादा टाइम होता है बिकॉज उसकी जो वो लोड है उसका बर्डन जो है वो तो शेयर हो रहा है. तो वो अब एक नए लेवल पे जाके सोच सकता है और वो स्ट्रैटेजीज को भी मतलब मजीद ग्रो किया जा सकता है. Then provides great personal fulfillment. The greatest satisfaction in life comes from helping others. अब this is something that everyone knows कि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो एक आपकी होगी ना जब आप प्रोडक्टिव लीडर होए कि जी मैंने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन एक पर्सनल फुलफिलमेंट की आ जाती है, एक सेटिस्फैक्शन आती है कि वी आर बीइंग हेल्पफुल टू अदर्स, वी आर हेल्पिंग अदर्स टू ग्रो विद अस. तो ये नहीं है कि हम उनको बस अपने ऊपर रख दिया है कि बस यू हैव टू फॉलो अस. So Yeah. they can take the lead at any time. This is what people development is all about. Yeah, thank you so much. And now I would like for Muhammad Salim Murtaza Saab to talk about the downside of people development. Downside of people development, first है requires high level of maturity and skill. मैम अच्छा इसको अगर मैं सारे को पढ़ दूं तो उसके बाद इस पे कर दूं बिकॉज Please. ऑलरेडी मैं Yeah. पीछे जो है वो काफी चीजें इस पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वो डाउन साइड वही है, डाउन साइड जो है ना बेसिकली वही है. सेल्फ सेंटर्डनेस कैन कॉज लीडर्स टू नेग्लेक्ट पीपल डेवलपमेंट. थर्ड है इनसिक्योरिटी कैन मेक लीडर्स फील थ्रेटन्ड बाय पीपल डेवलपमेंट. शॉर्ट sightedness can keep leaders from seeing the need for people development. Lack of commitment can keep leaders from doing the hard work of people development. अच्छा मैम मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना एक बस शेर ज़हन में आ गया, मैं ज़रा वो पढ़ देता हूँ. चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है. चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है. हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो. बेसिकली ये शेर क्या जो पढ़ा है उसी से ही मैं इन तमाम चीज़ों को रिलेट करूँगा. जो मैनेजर अपनी टीम को डेवलप नहीं कर सकता तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो प्रोफेशनली मैच्योर नहीं है, चाहे वो उसकी एज कुछ भी हो.
वो इनसिक्योरिटीज अगर अपने टीम मेंबर्स से, जिनको बेसिकली उसने उनके जरिए काम करवाना है, उनको रन करना है, उनको सुपरवाइज करना है, अगर वो उनसे ही इनसिक्योर है तो फिर उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होने की सबसे टॉप प्रायोरिटी पर उसकी जो है ना अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है उसको, ताकि उसको ये पता लगे कि उसने इन्वेस्ट कहाँ करना है। इन्वेस्ट सिर्फ पैसे नहीं होते, आपका टाइम भी होता है, आपकी जो स्किल्स आपके पास हैं, आपके इनर में है, जो अल्लाह ताला ने आपको सोचने की सलाहियत दी है, जो अल्लाह ताला ने आपको काम करने की सलाहियत दी है, अगर वो ट्रांसफॉर्मेबल नहीं है दूसरों में, तो फिर आपको शायद लीडर जो है ना वो बनने का हक भी नहीं है। जैसे हमने पीछे पोजीशन और परमिशन की बात की और फिर हम प्रोडक्शन पर आए हैं, तो अगर हम इसको तसलसल के देखें कि पहले तो आपने आपकी सुपरविजन में है उसके राइट्स क्या हैं। उसका सबसे पहला राइट ये है कि आपने उसको सिखाना है। आप सिखाएंगे तो वो आपका फॉलोअर बनेगा। फॉलोअर बनेगा इट मीन्स कि आपके साथ उसका जो है ना रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। और जब रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है फिर आप उसको बेशक घोड़े की तरह दौड़ाते रहें, आप उसको जो है जो मर्जी काम देते रहें, वो काम करेगा और आपके जो है ना सुपरविजन में करेगा, क्योंकि उसको ये ट्रस्ट होगा कि आप उसके लिए जो है ना हमेशा बेहतर सोचते हैं। तो वो जो शेर मैंने पढ़ा कि अगर हम कहें ना कि जी पूरे मैदान में मैं ही हूँ, तो फिर तो मुकाबला ही कोई नहीं होगा। फिर तो वो अवॉइड यस पीपल वाली बात है जो हेलन ने की थी कि फिर मैं सीखने के लिए नहीं आया, फिर तो बस यही है कि जी मैं ही हूँ। अल्टीमेटली क्या होता है कि आप किसी एक टाइम के लिए तो सरवाइव करते हैं, रूल करते हैं, बल्कि सरवाइव नहीं रूल करते हैं, बट फिर एकदम से जो है ना वो जमीन पर गिरते हैं आके, क्योंकि आपकी बेसिक्स, आपके फाउंडेशंस, आपकी जो टीम है वो स्ट्रांग नहीं है जो बेसिकली आपको अपलिफ्ट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक जगह पर सस्टेन करें, आप प्रोडक्टिव रहें, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी टीम को डेवलप करना है। ये टीम सिर्फ हमारे ऑफिस की नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम मैरिड पर्सन, तो मुझे मेरे घर वालों को भी स्ट्रांग करना है, मुझे अपनी मिसेस को भी स्ट्रांग करना है, बिकॉज मैं सारा दिन दफ्तर गुजार के आया हूँ। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो मेरे बच्चे कैसे स्ट्रांग होंगे, वो कैसे उनकी तरबियत कर पाएगी, वो कैसे उनको आज के हालात, ऑब्वियसली जब मेरे बच्चों ने, मेरा जो बड़ा बेटा है वो तकरीबन 6.5 साल का है, मैं अगर 10 साल बाद देखूं तो जब वो 16-17 साल का होगा तो आज वाले हालात नहीं होंगे। सो ये मुझे आज प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्ट करने के बाद अपनी मिसेज से उसके ऊपर पूरी काउंसलिंग करनी है, उनको बताना है कि आपने ये चीजें हैं जो आज हमारे बच्चे की जो है ना, जब आप तरबियत करेंगी, जब आप उनको सिखाएंगी, जब आप उनको बताएंगी कि सोसाइटी क्या है और किस तरीके से आपने उसके अंदर काम करना है और कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगी, तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। आप थोड़ा सा काम करेंगे, ऑब्वियसली जो आपकी पार्टनर है वो आपसे 2 कदम आगे काम कर रही है। Sound great, and thank you for the great input. I would not only agree with this, but also like to add that last time in the first session, I talked about the personal growth as your growth in relationship with your family as well. अगर आप देखें तो एक लीडर, अच्छा लीडर सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्पेस में है और इतनी ही जगह पे गिना जाएगा। लोग दूर तक जाते हैं और दूर तक देखते हैं। You know that leader actually is a role model in every aspect. और अगर लोग उसकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं और वहाँ पर उसको फेलियर में देख रहे हों तो people quit following या फॉलो करने में एक डिस्ट्रस्ट जरूर शामिल होता है। So that really matters. I agree on that. और आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया है इन चारों पॉइंट्स को, और बहुत सही, like I agree with everything. If somebody wants to add up तो हम सुनना चाहेंगे, otherwise I will move on to the next slide. So हम देखते हैं कि how to develop people, यहाँ sustain रहने के लिए what could you do? Recruit only the best people you can. So it is the best inside of you with which you can recruit the best people. ये अब आप जानते हैं कि who could be the best to be a team member,
to be a best for the organization. And that is how you can develop people, because kal ko jab aap us pe like even if it's raw, sometimes we take the people with no experience, they are the freshmen, lekin unko aap jante hain ki with little effort or with more learning they can improve, they can do better. So that is how you can do that. Of course, then people place people in the right positions. That depends on us as well, how to develop them. अब अगर लीडरशिप ही ठीक तौर पे लोगों को प्लेस नहीं करती है और ठीक पोजीशंस पर प्लेस नहीं करती है, तो ऑफ कोर्स कितना बड़ा नुकसान हो जाता है. सो देन दैट डज नॉट मीन कि वो शख्स उस पोजीशन के लिए ठीक नहीं था और उसने उस तरह से काम नहीं किया. रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे आ जाती है जिसने उसको उस जगह पे पोजीशन नहीं किया जहां उसको करना चाहिए था. So model to others the leadership behavior you expect from them. Coach others to live well and perform well. Empower others so they can succeed. These are the simple points that are already understood. We go to the next slide, जहां पर आकर the 21 irrefutable laws of leadership में से laws implement होते हैं at this level, how to develop people. It's the law of process, where leadership is a process. It does not happen overnight. Law of addition, you add value when you serve others. Law of inner circle, those in your inner circle determine your potential. So people development में आपके inner circle पे like this law matters a lot, that the inner circle that you have, uska influence kya hai. And if that inner circle is insecure, that inner circle does not allow, and that consists of the selfish people, of course that is going to challenge you as well. So who you sit with, who you talk to, who is your coach, who is your mentor, that matters as well, कि आप कितना दूसरे लोगों की डेवलपमेंट में किरदार अदा करते हैं. Then law of empowerment, only a secure leader is willing to give power to others. इस पे बहुत डिटेल में बात की है. Explosive growth का law, developing new leaders is the only way to explosively grow the organization in a way you could never achieve on your own. Then buy-in, this is the law of trust, and beliefs to get to the next level. At this level, these are few beliefs. ये कुछ अकायद हैं. Your biggest goal as a leader is to create more leaders. अगर यही गोल आपके अंदर नहीं है तो you stop developing people. अगर प्रोडक्शन तक ही था कि मैंने जो हासिल करना है मैंने हासिल कर लिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है और उसमें पैसा आ रहा है, उसका नाम बढ़ गया है, लेकिन ये कुछ देर के लिए है. लेटर आपने अगर लोगों को डेवलप नहीं किया है तो यू कैन नॉट डेवलप. हम देखते हैं डिक्टेटरशिप में, हम देखते हैं देयर आर the things like dictatorship में कि when they are thinking about the solo flight और वो नहीं लेकर जाते हैं people development पे बात को, तो किस कदर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. So that is what few organizations take like that. और वो होता है कि we are not about developing people, we are about developing ourselves. वो अपने मैं और मेरी तक रखेंगे जब चीज़ों को. कई बार कुछ family businesses होते हैं, कई बार कोई deserving लोग होते हैं, they are not brought in front and they are not developed. So status quo पे चीज़ें रहना शुरू हो जाती हैं, solo flight पे रहना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, तो that could be a challenge as well. फिर उसके बाद हम बात करते हैं the last level of leadership, it is known as pinnacle, the level of respect. और इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि 1% लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं अभी तक के स्टैट्स के मुताबिक. इसलिए कि मोस्टली जब लोग पीपल डेवलपमेंट पे ही नहीं आते और इनसिक्योरिटीज का शिकार होते हैं, तो who would be there to respect them, who would be there to remember them, who would be there कि वो उनको ऑनर करे या उनके कंट्रीब्यूशन को याद रखे. सो बहुत कम लोग हैं जो पीपल डेवलपमेंट के प्रोसेस में से गुजरते हुए फिर इस लेवल पर आ जाते हैं कि उस लेवल को जब हम we know it as the level
of respect कि वो कहीं पर भी हैं तो उनका नाम इज्जत से पहचाना जाता है. वो like आज मौजूद हैं या नहीं हैं, still they are leader because they had a legacy. So इस level के leaders, they are about their legacy. इस level के leaders, they are about the level they have achieved, the sacrifices they have made, and the improvements they have shown, the success they have achieved in terms of gaining respect from people. But this level is the level gained by 1% of leaders. Few people make it here. आपके सामने है, आप देख सकते हैं. On the slide, people follow you because of who you are and what you represent. अब मैं चाहूंगी कि इस पर आप जरूर बात करें. मैं आपके साथ इसको पढ़ना भी चाहूंगी. Few people make it here, 1% of the leaders. As a level 1 leader, you are merely a position or title. As a level 2 leader, you focus on people and people's skill. As a level 3 leader, you focus on a personal and corporate productivity while still focusing on people. As a level 4 leader, you are adding another layer, and that is developing the people below you. Think of these different levels as building blocks. If you are on level 4, you are still taking care of your people and producing results. But your focus is on developing the potential in others, which means 80% of the time you are developing other people. And finally, a level 5 leader creates leaders over a lifetime. Your contribution, lifetime contribution. It's a life commitment, and the leaders, they grow to become leaders that develop other leaders. Level 5 leaders bring success wherever they go. They create a legacy of leadership in their organization. They lift that organization to new heights, and they create an environment that benefits all. यहाँ पर आकर मेरे सामने एक नाम आ रहा है पाकिस्तान में ईदी साहब का. And we find him as a pinnacle level leader. Although he is no more with us, but the legacy remains. He started from a position, if you know the story, and he was a person, jab bahut young age mein, he was living with his mother and he was taking care of her. और बहुत छोटी सी क्लास में he was taking care of his ailing mother, और उसमें he went through a lot, बहुत सारे challenges में से, but gradually, he would be managing to take care of his mother. और जब उनकी mother की death हो गई, तो इस टाइम में he had a vision on his mind, और उस vision के साथ he started taking care of the other people, लेकिन funds काफी नहीं थे. So he gradually built up trust with the other people, और उनके साथ relationship बनाए, जिसमें आकर लोगों ने उनको थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया, और उन finances से, उन funds से he started helping other people. और इसी तरह से करते करते he built up more relationship और उनके trust को कायम रखा, और एक position उनकी बन चुकी थी लोगों के सामने. Would you like to add right away, sir? Please go on. नो मैम, आपने बात मुकम्मल कीजिए, मैं उसके बाद बस ईदी साहब की ही बात है वो मैं शेयर करना चाह रहा था. आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए. Yes. And on that point कि अब वो लोगों की मदद के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप उनकी स्टोरी के बारे में जब जानते हैं, you get to know कि अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ही इज गिविंग द रिजल्ट्स जो उनके विजन के हैं, जो उन्होंने एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारा कायम कर लिया है चंद लोगों के साथ मिलकर, तो वहां पर वो प्रोडक्शन उनको मिल रही है. लाइक दे आर अचीविंग टू हेल्प many people through
the money that they are receiving, and through providing the health care, taking them to hospitals, are gradually ye bharta chala gaya hai. And he started developing people by developing the organization. रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितने ज़्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, जितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उतने ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, इदारा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, रिजल्ट्स और ज़्यादा आते चले जा रहे हैं। और फिर एक टाइम ये आ गया कि दिस मैन इज़ नॉट अबाउट द ब्रांड्स, ही बिकेम अ ब्रांड हिमसेल्फ। दिस मैन इज़ नॉट अबाउट कि वो ही इज़ एन एलीट, but actually he was the one known as he was the one known more above the elites, because ab baat aa rahi thi ki wherever he is going he had received a level जहां पर आकर लोग उनके पैसे, उनकी गाड़ियों की वजह से उनको नहीं जानते, लोग उनको जानते हैं what he has achieved, जो नाम उन्होंने कमा लिया और उस चीज को। So he himself is known as an organization, he himself is a brand, and the legacy remains. Different organizations हैं, corporate side की different organizations हैं, non-profit पे काम कर रही हैं, IT की हैं, so training के लिए हैं, different organizations and different levels, उसमें लोगों के पास positions हैं, but these 5 levels of leadership are implemented in every organization, be it a religious organization, be it a corporate organization, an IT company, or whatever. तो इसमें आकर it depends on you that how you grow, it depends on how you continue in your production, in developing other people, in your personal growth, so that you reach to the level where you are known, even if you are no more. और मैं थोड़ा सा ऐड करते हुए चाहूंगी कि सलीम साहब इस पे बात करना शुरू करें। Whatever we are now, we are the result of someone else's contribution, and it began with the leadership at home. That leadership was the leadership of our parents, our guardians, और उनकी लीडरशिप से हमारी लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूशन शामिल हुआ है, and then we have started growing. So that was a leadership at home. If it were not there, we would not be here, और हमारी लाइफ का ये कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू ना करता। Leader is not about a leader in the professional life, in the workspace, but he is a leader overall. इसी तरह से when it comes to the professional zone, वहां पर आकर leadership is enhanced, skill है और इसके वक्त के साथ साथ ये develop होती चली जाती है, and you always got the opportunity, but it depends on you कि आप इस tier को किस तरह से add up करते चले जाते हैं और किस तरह से आप इसमें ग्रो करते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू आर ऑन द पोजीशन और आप वहाँ पर एंड कर लें, इट्स नॉट अबाउट यू आर इन द गुड रिलेशंस विद पीपल और आप वहाँ पर एंड कर लें, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी प्रोडक्शन आना शुरू हो गई और आप वहाँ पर एंड कर लें। यू कैन कंटिन्यू इवन इफ यू आर नो मोर। So that is where I would like to stop for now. और चाहूंगी कि मोहम्मद सलीम साहब इसमें कुछ ऐड करें। ओके मैम, मैं बस बेसिकली ईदी साहब की जो लाइफ है उसको लीडरशिप से जो है मैं रिलेट करना चाहूँगा। वो हम सबको जो है वो नेपोलियन का जो है वो तो याद है, गिव मी एन एजुकेटेड मदर आई शैल प्रॉमिस यू द बर्थ ऑफ सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड नेशन। यानी तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें जो है वो पढ़ी लिखी कौम दूंगा। तो ईदी साहब से किसी ने सवाल किया कि आपके अंदर ये देने का जज्बा कैसे पैदा हुआ। तो बेसिकली जो लीडरशिप की क्वालिटी है ना, मैं सिर्फ उसकी बात करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो बचपन में मेरी माँ जो मुझे 2 पैसे दिया करती थी, कहती थी ये 1 पैसा जो है ये तुम्हारा है और दूसरा पैसा तुमने ढूंढना है किसको इसकी जरूरत है। तो बेसिकली ये जो माँ थी ना उन्होंने उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पैदा की और उनको इस लेवल तक लाने में उस माँ का बहुत बड़ा किरदार है। तो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है बाय बर्थ भी होती है, कुछ लोग इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम सीखते भी हैं। तो शायद मुझे लगता है कि जो लीडरशिप की क्वालिटी थी ये उन्होंने वहां से सीखी
और फिर वो इतने बड़े लीडर बने कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में उनका नाम था। और उनको जो है जिस एजाज से जब वो इस दुनिया से गए, जिस एजाज से उनको दफनाया गया, शायद वो चंद ही लोगों को हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं, उस एजाज के साथ जो है उनको दफन किया गया। तो मैं एक चीज मैम और भी कहना चाहूँगा। बेसिकली जो प्रॉब्लम है ना लीडरशिप और मैनेजर के दरमियान, जो इन इन दोनों को अलग करता है, वो यानी जिंदगी का जो है ना, वो हर खेल 6 इंच जमीन से जो है ना 6 इंच ऊपर खेला जाता है। यानी वो एरिया जो आपके दो कानों के दरमियान में है, यानी हमारा जो दिमाग है। बेसिकली हम घरों में नहीं रहते, बंगलों में नहीं रहते, मकानों में नहीं रहते, हम अपने दिमाग में रहते हैं, जो एक बहुत वसी है। यानी अगर आपने ये सोच लिया कि आपका जो है वो लेवल ये नहीं है, आपका लेवल इससे बहुत आगे है, तो फिर आप स्ट्राइव करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर उसके लिए आप जो है ना मौके ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटीज को जो है ना वो ग्रैब करते हैं। और फिर आप लोगों को भी कोशिश करते हैं, जैसे हम पीछे से पूरी सीरीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब तो वो रिस्पेक्ट है ना, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये जो आगे बढ़ते हैं, लोगों को डेवलप करते हैं और उनको प्रोडक्टिव बनाने में अपना पूरा जोर लगाते हैं, उनका एंड रिजल्ट जो होता है वो रिस्पेक्ट होता है। जैसे अभी ईदी साहब की आपने एग्जांपल दी कि उन्होंने पहले सारी जिंदगी क्या किया, लोगों को इस काबिल किया, जो बच्चे, क्योंकि उनका जो वो शेल्टर होम्स हैं, वहां पर जो बच्चों को यानी लोग फेंक देते थे, उन्होंने वो झूले का कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया था। उन्होंने ऐसे बच्चों को पाला, बड़ा किया और इस माशरे का एक जिम्मेदार शहरी बनाया। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या एंड रिजल्ट क्या आया, रिस्पेक्ट मिली उनको। मुझे नहीं मालूम कि वो जिन बच्चों को उन्होंने बड़ा किया और इस माशरे का हिस्सा बनाया, सिर्फ उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, पूरी दुनिया ने उनको रिस्पेक्ट दी। तो जब आप लीडर होते हैं और आप दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, तो फिर आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अशफाक अहमद साहब जो है मरहूम, वो अक्सर ये दुआ किया करते थे अपनी ज़िंदगी के अंदर कि अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने वाला बनाए। यानी जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, फिर उसके लिए रिस्पेक्ट होती है। आज ईदी साहब को गुजरे कितने साल हो गए हैं, लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने लेगेसी क्रिएट की, क्योंकि अभी आपने लेगेसी की बात की, फैसल ईदी जो उनके बेटे हैं, वो भी अपने बाप की जो है ना वो दी हुई चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं, तो वो एक लेगेसी क्रिएट हो गई है। अशफाक अहमद साहब, मेरा नहीं ख्याल कि जो भी यानी पर इल्म से जो है ना शगफ रखता है, उसको अशफाक अहमद साहब ना याद हो। वो कैसे भूल सकता है अशफाक अहमद साहब को। तो वो लोग हैं जो दुनिया में से तो चले गए, लेकिन जाते हुए अपने कई शमे जो है ना वो जला गए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन का। इफ somebody would like to add. Okay, so quickly हम इसकी डाउन साइड को देखते हैं। अपसाइड भी है और डाउन साइड ऑफ पिनिकल लेवल। अपसाइड है, पिनिकल लीडरशिप क्रिएट्स अ लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल के लीडर्स होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का लेवल ऑफ कोर्स इंक्रीज्ड है, वो वर्ल्ड वाइड नोन होगी। अब जिस तरह ईदी साहब का नाम है, ऐसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो पहचाना जाता है दुनिया भर में। Likewise, pinnacle leadership creates a legacy within the organization, make an impact beyond your tenure. वो जिंदा नहीं, हयात नहीं है, लेकिन उनके काम और जो उनकी विजन है वो आज भी लोगों के दरमियान जिंदा है। So that is an upside of pinnacle जो इस लेवल पे लीडर्स अचीव कर लेते हैं। Pinnacle leadership provides an extended platform for leading. You can reach far beyond your own organization. और ये किस तरह से है, आप देखें पीस मेकिंग में कई जगहों पर ये लोग इनवाइट किए गए, कई जगहों पर इनको बुलाया गया, जबकि किसी दूसरे मुल्क में शायद वो जो जंग चल रही है उसमें ये अदरवाइज उस मुल्क के शहरी नहीं थे, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनली वो लेवल अचीव कर लिया लीडरशिप में, जिसमें कई बार ऐसे लोगों की काविश जो है वो
इनवाइट की जाती है, उनकी एफर्ट के लिए बाकायदा दे आर कॉल्ड एंड दे आर इनवाइटेड टू कम एंड इंटरवीन. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स कि इस लेवल पर आकर यू गेट टू address the whole world, and you get to share your vision, you get to take part with the whole world. Next is downside of the pinnacle. Being on the pinnacle can make you think you've arrived. You are either growing or dying. So ये इसका downside है कि कुछ लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि बस अब बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है और अभी मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, और वहां पर आकर उन्हें लगता है कि बस मैंने जो करना था वो कर लिया है. सो ऐसा नहीं है. ऐसे में यू कैन ग्रो इवन फर्दर और यू कैन डाई. फिर being on the pinnacle can lead you to believe your own press. Don't take yourself too seriously. कई बार हम देखते हैं कि इस लेवल पर जब लोग हैं, बेशक वो अखबार की खबर की नज़र में रहते हैं, और इस बात को लोग समझते हैं दिस कैन कॉज प्राइड इन देम, और ये बात उनको गिरा भी सकती है. बीइंग ऑन द पिनिकल कैन मेक यू लूज फोकस. कई बार इस लेवल पर पहुंचकर जो आपने अच्छा आगाज किया होता है वो खराब भी हो सकता है, और आप अपना फोकस अपने विजन पर लूज कर सकते हैं. सो गोइंग टू द नेक्स्ट, इस प्लेटफॉर्म पर हाउ टू यूज द पिनिकल एज प्लेटफॉर्म. इसका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन किस तरह से? रिमेन हम्बल एंड ओपन टू लर्निंग. This is the level. You have not achieved all. You are not done with all. You have to remain humble to learn even more. Create an inner circle to help keep you grounded. यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी. Once it happened कि अभी जॉन सी मैक्सवेल का जो लेवल है वो पिनिकल है. He is known worldwide, और ये उन्हीं की किताब है जहाँ से ये सारा इक्तबास है और आज की शेयरिंग है. It so happened that there was something that was being, that was influencing negatively through him. और उनकी वो बात आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट बनती जा रही थी और उनकी टीम को अफेक्ट कर रही थी, और ग्रेजुअली उनका जो इन्फ्लुएंस है वो नेगेटिव होता जा रहा था. सो वन ऑफ द इनर सर्कल पीपल, उन्होंने ये सोचा कि हाउ, लाइक द टीम वाज थिंकिंग कि हाउ कुड वी help him come out of this, and they knew that they are the inner circle who are trusted कि उनकी कोई भी बात हो critically analyze करें और उनको help out करें overcome करने में. So they started thinking. So one of the team members of this inner circle came up with the idea, और उन्होंने एक खास इवेंट पर जो विद इन द टीम था उनको एक टी शर्ट प्रेजेंट की, और उस टी शर्ट पर उन्होंने उस जो नेगेटिव एट्रीब्यूट उनके अंदर डेवलप हो रहा था उसके बारे में हाईलाइट करके लिख दिया, और नीचे स्माइली बना दिया और ऊपर लिख दिया कि आई एम, और ये लिख दिया साथ में. अब ऑफ कोर्स वो जब उन्होंने पढ़ा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिकॉज ही थॉट दैट ही वाज डूइंग वेल, लेकिन ये चीज टीम को अफेक्ट कर रही थी और ये उनके अंदर डेवलप भी हो रही थी. ही रिमेन्ड क्वाइट एट द मोमेंट, लेकिन लेटर ऑन ही सैट डाउन विद द टीम एंड ही आस्क्ड देम कि मुझे सब अच्छा लगा, वी हैड गुड टाइम, वी चीयर्ड अप, the cake was good, but I'm not happy because of the writing on that t-shirt. So उन्होंने कहा we are actually not happy with the thing that we wrote on the t-shirt being in you. He was like, what? But since he had given the permission कि उनकी वो टीम critically think करे, उनकी टीम इस मामले में उनको कोच कर सके, so he asked them that how has it affected you and how come it is in me. और जब उन्होंने डिफरेंट रेफरेंसेस के साथ शेयर किया कि फलां वक्त में आपके अंदर से ये चीज ने हमें प्रॉब्लम दी है,
या दूसरे टीम मेंबर्स को डिस्टर्ब किया है, बाकी टीम को अफेक्ट किया है, दिस इज व्हाई वी थॉट ऑफ अ वे टू रिलेटेड टू यू और आप तक ये बात पहुंचा सके। तो उन्होंने खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट किया एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग टू ओवरकम दिस। So this happens that in this at this pinnacle level, to sustain at this platform, your inner circle is critical. They help you keep grounded. They keep you humbled. They keep reminding you who you are, and that inner circle should be there. Create room at the top. अभी यहाँ पर बात हुई पीपल डेवलपमेंट की, और इसी तरह से कि जब आप उस लेवल पे पहुंच गए तो डोंट थिंक कि अब यहाँ पे पहुंच गए और कोई और नहीं आ सकता है। क्रिएट रूम फॉर अदर्स टू ग्रो, क्रिएट रूम फॉर योरसेल्फ टू इम्प्रूव, फोकस ऑन व्हाट ओनली यू कैन डू, योर कोर स्ट्रेंथ्स। इस लेवल पर पहुंच कर के ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और वो आपके इस लेवल की वजह से है, इसलिए जरूर उसका भरपूर फायदा उठाएं और उस लेवल पर उन चीजों को कर जाएं। नेक्स्ट इज फोकस ऑन प्लान योर सक्सेशन एंड योर लेगेसी। सो अभी जैसे बात हुई कि ईदी साहब ने अपने फर्जंद को तैयार किया और एज इट इज अपनी विजन इम्पार्ट करके रुखसत हुए इस दुनिया से। इट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लेगेसी छोड़ने के साथ साथ अपनी सक्सेशन भी प्लान करें। We go on next, and these are the laws of leadership at the positional level, where the law of respect really helps you. People naturally gravitate toward leaders who are stronger than themselves. Law of intuition, you will be able to see what courses of action lead to what outcomes. Law of timing, you will have learned how to take the right action at the right time. Law of legacy, your legacy will be measured by your successors. And the law of explosive growth tells us developing new leaders is the only way to explosively grow the organization in a way you could never achieve on your own. So this is all for today. Thank you so much. If you want to add anything to these points at the end, otherwise we are done for the day. And thank you for your participation. थोड़ा सा कुछ points पर आकर I had to ask you by myself, आपके नाम लेकर, you liked it or not, but I came here actually to facilitate, but फिर बहुत ज़्यादा मुझे खुद भी बोलना पड़ा है। Thank you so much for all your contribution, and over to Mansoor Saab now. Thank you very much for just a minute. Okay. If you could mute yourself, sir. Mohammad Salim Murtaza साहब ने unmute किया था, सर आप mute कर सकते हैं। Yeah, these are the levels that we shared so that you can evaluate yourself, your level of leadership, and observe yourself. I believe we all got this opportunity together कि हम mirror कर सकें अपने आप को, अपने level of leadership को, and how we can develop where we are at the moment, what more we get to do. So I believe this is how this session has helped you. Ji Mohammad Salim Saab, and then over to Mansoor Saab. मैम मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि बहुत बेहतरीन सेशन के लिए। सेशन बहुत अच्छा था, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिकॉल हो गई जो पहले कहीं पढ़ी थी, लोगों से सुनी थी, तो वो पार्टिसिपेट भी किया उसके अंदर और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का भी आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी शुक्रिया। जी थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और ताकि हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें और अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। और मैं आप लोगों के साथ इसका जो लर्निंग मटेरियल है वो भी शेयर कर दूंगा, और आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉर्डिंग वो भी इस ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। राइट, इंशाल्लाह कल आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे और एंजॉय करें लाइफ को।
टेक केयर, हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज।